Hello students, greetings of the day. This is your NE Rao, faculty in physics from VIP classes. Yeah, based on request of students, so I am doing mathematical physics part differentiation. See students, mathematics is language of physics, isn't it? So without maths we can't do. So we can't understand physics concepts. Therefore, so in the process of understanding physics, we need to understand what differentiation means. ठीक है? या बच्चों टुडे आज हम डिफ्रेंशिएशन के बारे में बात करेंगे. ठीक है. सो डिफ्रेंशिएशन ये चीज़ क्या होता है. सो व्हाट इज़ डिफ्रेंशिएशन. ओके. सी वी वांट टू मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी. सो अगर किसी एक क्वांटिटी में चेंज चाहिए हमें विथ रेस्पेक्ट टू दूसरे क्वांटिटी के अनुसार. सो मान लीजिए एक फंक्शन है, लाइक फॉर एग्जांपल y इज इक्वल एफ ऑफ x इज़ ए फंक्शन. ओके. दैट मीन्स हियर y डिपेंडिंग ऑन x. यहाँ y x के ऊपर डिपेंड हो रहा है. वो कैसा भी ले सकते हैं आप. मान लीजिए आप ले रहे हैं y इज इक्वल एक्स स्क्वायर. ओके. सो अगर x को डिफरेंट वैल्यूज़ दिए तो y भी चेंज होगा, है ना. सो मान लीजिए जब x चेंज टू x प्लस डेल्टा एक्स, देन y विल चेंज टू से y प्लस डेल्टा y मानेंगे. सो अज्यूम दैट जब x बाई डेल्टा एक्स चेंज होता है तो y भी कुछ डेल्टा y से चेंज हो रहा है मानेंगे हम. तो अगर हम यहाँ लिखे तो y प्लस डेल्टा y, ठीक है, y प्लस डेल्टा y चेंज टू बाई स्मॉल अमाउंट डेल्टा y, देन x आल्सो चेंज बाई स्मॉल अमाउंट डेल्टा x. सो हम स्क्वायर कर सकते हैं. ठीक है. नाउ सो आई वांट टू फाइंड व्हेन x इज चेंजिंग, then how y is changing. Why? Because y is a function of x. So I want to find the change in value of y, okay, with respect to change in value of x. And that change in value of y with respect to change in value of x, this we call it as average change. हम क्या बोलेंगे इसको? Average change. जब y में जो change है डेल्टा y है तो corresponding change in x क्या है? डेल्टा x. So this change in value of y with respect to x we call it as delta y by delta x. हमें इसे बोलते हैं average change. क्या बोलते हैं हम इसे? Average change बोलते हैं. तो now, so if this y is going to change by delta y, x is changing by delta x, substitute in this function. So now if I take this particular function, so y plus delta y will be, expand the bracket, क्या होगा? a plus b whole square का फार्मूला a square plus b square यानी delta x whole square plus 2x into delta x. Okay. So here as y is equal to x square, so y plus delta y is equal to y is equal to x square, no? So delta x whole square plus 2x into delta x. These two get cancelled. So what will you get? Delta y is equal to 2x delta x plus delta x whole square हो रहा है. So मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? y फंक्शन ऑफ x है. अगर x चेंज हुआ तो y भी चेंज होगा. मान लीजिए x टू x प्लस डेल्टा x हुआ तो y हो रहा है y प्लस डेल्टा y. तो चेंज इन वैल्यू ऑफ y डेल्टा y है, चेंज इन वैल्यू ऑफ x क्या है? डेल्टा x. सो चेंज इन वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हम क्या बोलते हैं उसको? डेल्टा y बाय डेल्टा x. यू अंडरस्टैंडिंग? सो वी कॉल डेल्टा y बाय डेल्टा x इज चेंज इन वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एंड वी आर कॉलिंग इट एज व्हाट? एवरेज चेंज. ठीक है. सो नाउ, so here you should understand one thing. So if delta x is changing by very small amount, say for example students, मान लीजिए डेल्टा x 0.001 चेंज हुआ है तो y में कितना चेंज होगा हमें निकालना है. मान लीजिए डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, मीन दिस हाउ मच, राइट? 10 power minus 3. So if I ask you delta x square value how much, then 10 power minus 3 whole square. डेल्टा 10 power minus 6 हो रहा है डेल्टा एक्स स्क्वायर. सो 0.0000 है ना, 01. राइट. सी व्हेन डेल्टा एक्स इज स्मॉल, डेल्टा एक्स स्क्वायर इज स्टिल स्मॉल. बहुत ही छोटा हो जा रहा है. बात समझ में आ रही है? सो अगर अंडर दिस कंडीशन, सो आई वांट टू फाइंड आउट द चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अंडर कंडीशंस. कौन से कंडीशंस? अंडर कंडीशंस ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो. बहुत छोटा चेंज एक्स में. तो हम मैथमेटिक्स लैंग्वेज में इसको ऐसा लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बोलते हैं. एंड दिस इट सेल्फ इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस चेंज. व्हाट वी कॉल बाय दिस वन एज इंस्टैंटेनियस चेंज. एंड दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. क्या बोलेंगे इसको हम? रेट ऑफ एवरीबडी
rate of change of y with respect to what? X. And this rate of change of study of variation value of y with respect to x, this itself is, we call it as differentiation. क्या बोलते हैं हम इसे? Differentiation. And geometrical language में इसको हम बोलते हैं slope of yx graph or yx curve. So therefore, now whenever we want to study variation in one quantity with respect to the other, we use the concept of rate of change. If we take total change in value of y, delta y, but total change in value of x, we are calling as average change. When delta x is very small, then the total average change, it is called instantaneous change. Okay, and this process of finding the variation in one quantity with respect to the other, we call it as differentiation. इस तरह का जो प्रोसेस है ना, चेंज इन वैल्यू ऑफ y में फाइंड आउट करना, जब x का वैल्यू बहुत छोटा होता है ना, दैट पर्टिकुलर थिंग वी कॉल इट एज डिफरेंशिएशन. Clear? So now, so here actually geometrical meaning also we can show here, students. Okay, so now you can write the formula now. Limit under what condition? Delta x tending to 0, this delta y by delta x we are calling as dy by dx. Therefore the way of writing dy by dx को हम बोलते हैं लिमिट. हाँ, कंडीशन क्या है? डेल्टा एक्स बहुत छोटा चेंज हो रहा है. डेल्टा वाई, सी वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, राइट? सो I can write down this y plus delta y. This is what? So y is equal to f of x, right? So delta y becomes now f of, this is x plus delta x minus y. Okay, see, one second, I will write here. Y plus delta y is f of x plus delta x. Y is equal to f of x, right? So I can write y plus delta y f of x plus delta x. So from here delta y, how much will get? f of x plus delta x minus y. So हम इसे लिखते हैं f of x plus delta x minus f of x. कुछ भी नहीं है, change in value of y is final value minus initial value. ठीक है, so इसको way of writing, nothing else. So final value is f of x plus delta x, initial value is f of x divided by delta x. Under the small change in value of x, this average change itself is called differentiation. So in physics, how do you find this particular values application? हम मानते हैं कि, क्या मानते हैं हम, जब बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ओके, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पोजीशन चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वी कॉल इट एज एक्सेलरेशन. सो लाइक दिस इन फिजिक्स, whenever you are studying the variation value of one quantity with respect to the other, the process of finding the variation or change in value of y with respect to x is called differentiation. Okay, so now, so here the equation which I wrote now, no, so we have found delta y value here, right? Now I will take this equation now. So under condition delta x tending to 0, this instantaneous change is called differentiation. I mentioned you. Now we are studying variation value of y function x square example, right? Let us come back to the example now. So कितना find out किए हम? Delta y is equal this much. Now let us take it. Now therefore I am just recalling, when I take y is equal to x square, I found the value of delta y. How much we got, beta? Just go back. Delta y we got as 2x delta x plus delta x square, right? So now I want to find delta y by delta x, right? So divide with delta x, 2x delta x by delta x plus delta x whole square, है ना? हाँ, so you can write delta x whole square by delta x, right? Delta x whole square divided by delta x. You can write this. And one more point here, I am studying the variation value of y with respect to x under what conditions? Delta x tending to 0. When delta x tending to 0, what I am doing? I am neglecting this value, isn't it? Delta x तो बहुत small है, so इसको neglect कर सकते हैं. So you can neglect this term, beta. When you neglect this term, then you can write the condition now. Limit delta x tending to 0, delta y by delta x is equal to 2x. क्यों? ये delta x cancel हो जाएगा. So this is 2x. So we call now this particular thing itself we are calling as what? Dy by dx. So how much you got here? 2x. For what function you have taken? So d by dx of y you have taken as x square. This has come as 2x. Okay, similarly in mathematics, see in physics we don't talk about in detail just what is the physical meaning of it.
and basic application formulae, and its application part we talk in physics. Okay, now generally, so in mathematics we'll take the function like y is equal to x power n. Okay, and by same method of finding y plus delta y, we find x plus delta x whole power n. So this expansion will be by binomial expansion, and then when you make the approximation that delta x tending to 0, then delta y by delta x value, okay, we call it as what, beta? Dy by dx. When you do it, no, so then after summarizing you will find the same expression like d by dx of x power n, we come across n into x power n minus 1. This formula will come across. Like that for all trigonometric function in detail in mathematics we'll be studying. Okay, now in physics part, like this formula we derive. Okay, so now this is what finding the rate of change is called what? In one quantity with respect to other quantity is called differentiation. Now let us see its geometrical interpretation. So what actually meaning of this one? So geometrical interpretation. Okay, so see students, now as you are taking the graph, you are taken y is equal to x square, right? So if you give different values for x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 1, y is equal to 1, x is equal to 2, y is equal to 4, right? Like x is equal to 3, y is equal to 9, x is equal to 4, y is equal to 16. Like this, if you draw the graph profile y versus x, so as you are taking values by 1 unit on x axis, 1 2 3 4 5, take double values here. Okay, so squares you can take by 1 4 like that, yeah, or else you can take 2 values are very high, no, so 5 5 you can take, or else scalar on y axis. Okay, so if I take scalar on y axis as 4 4 4, okay, 8 मान दीजिए 12 है ना, 16, like that 20 you can take. So 1 unit on x axis is 1 square box we call in graph, right? And 1 unit on y axis is equal to 4 units. Okay, right? When x is equal to 0, y also 0. When x is equal to 1, y also 1. Exactly half is 2, उसमें half that is 1 होगा, है ना, राइट? x इज इक्वल 2 लीजिए तो y कितना होगा? 4 होगा. y 4 है, x इज इक्वल 2 के पास. मान लीजिए x इज इक्वल 3 है तो y कितना होगा? 9. सो 8 एंड एग्जैक्टली 10 एंड एग्जैक्टली हाफ इज 9. When you take x is equal to 4, y is equal to 16 you are getting. If you draw the graph, the profile graph is like this. ये होगा क्या? y is equal to x square का, और इसको हम पैराबोला बोलते हैं. Okay, symmetrical about y axis. You can take negative values also. The graph will extend in negative also here like this. Okay, so now here what is average change when x is changing from, for example, 1 to 3x is changing. So at x1 is equal to 1, x2 is equal to 3. So how much change in value of x? x2 minus x1. This is we call delta x, that is 2. When x is changing by 2, y value how much? So when x is equal to 1, y1 will be is equal to 1 square, which is equal to 1. So y2 will be how much, beta? So when x2 is equal to 3, y2 will be is equal to 3 square, that is 9. So delta y will be how much now? 9 minus 1 is 8. So here overall average change if I talk, so delta y will be, so 1 to 9 it is changing, that means delta y is 8. So average change delta y by delta x is equal to 8 by 2, which is equal to 4. Overall change in an interval of delta x is equal to 2. Now what is instantaneous change? So here you see, beta, x is equal to 1 to x is equal to 3, right? So if you draw this graph, you are finding like this. Now the line joining this point say A, this point is say B. So the line joining AB, it's a slope. If you take slope, means all of you know very well. So in mathematics already you learn. So slope m is equal to tan theta is equal to change in value of y by change in value of x. Again I will throw some light on slope just okay after some time. Now currently as per your 9th class 10th class knowledge, you try to understand slope, variation value of y coordinate with respect to x coordinate, difference in y coordinate by difference in x coordinate. ये होगा difference in y coordinates y2 minus y1. ये होगा difference in x coordinate x2 minus x1. तो कितना आया slope बोलिए? Delta y. So delta y you know. So how much changed? So it was x is equal to 1, y also 1, x is equal to 3, y also 9. So 9 minus 1, how much this is? 8. And delta x how much? This is 2. So delta y 8 by 2, which is equal to 4. So this average change is what? This is the slope of
line joining AB. Slope of line joining AB. Okay, so when y is equal to x delta y by delta x, average change is slope of line joining AB. Now our aim is to find instantaneous change. So delta x tending to 0, delta y by delta x, we are calling as what beta? Instantaneous change. Right? So from this geometrical interpretation, as y is equal to x profile like this, when x is equal to 1, y also 1 beta, isn't it? When x is equal to 3, so here y is equal to 9. So the line joining the graph A, this is point A, this point B, this is the slope of line AB, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, वेरिएशन वैल्यू ऑफ y विद x बना रहे हैं, है ना? जब x 1 था तो y भी 1 था, जब x 3 था तो y 9 था. तो जब x by 2 चेंज हुआ डेल्टा x, तो y कितना चेंज हुआ? by 8 चेंज हुआ. तो हम बोल रहे हैं लाइन जॉइनिंग AB का जो स्लोप है ना, वो है एवरेज चेंज. देन अगर हम डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 कर रहे हैं, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा? मान लीजिए ये इतना बड़ा इंटरवल है ना, सो मान लीजिए यहाँ A to AB है ना, इतना बड़ा इंटरवल है. जब हम इंटरवल को कम करते जा रहे हैं, ऐसा कम करते जा रहे हैं, से मान लीजिए वी आर मूविंग जस्ट लेफ्ट साइड, सो दिस डेल्टा एक्स बिकमिंग वेरी स्मॉल. जब ए विड्थ कम होते जा रहा है तो ये बी पॉइंट जो है ना, ए को आके अप्रोच कर रहा है. डेल्टा एक्स का 0 का मतलब क्या है? ये जो गैप है ना बहुत कम है, बहुत छोटा है. छोटा है का मतलब क्या हो रहा है? बी ए को अप्रोच हो रहा है. बी इज अप्रोचिंग व्हाट वी कॉल बेटा, वी कॉल बी अप्रोचिंग ए. ओके, थोड़ा टफ लगता है आपको, सो फिजिक्स में है, सो डेट समझने का कोशिश करो, ठीक है. सो आपके मैथ्स टीचर्स बहुत बढ़िया समझाएंगे आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर में, लेकिन अभी नहीं है. वो जो फर्स्ट ईयर हमारा जो 11th क्लास शुरू होने के बाद 4-5 महीने के बाद समझाएंगे वो लोग. तो उस वक्त तो हमें कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा ना. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स. ओके, सो बी इज़ अप्रोचिंग ए बोलते हैं हम. जब बी अप्रोचिंग ए तो डेल्टा एक्स क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है. तो लाइन जॉइनिंग जो ए बी है ना, सो लाइन जॉइनिंग जो ए बी है ना, यहाँ देखो एक ग्राफ में देखो. सो ऐसा ए था पॉइंट, ऐसा बी पॉइंट था. ये जो है लाइन जॉइनिंग ए बी, इजंट इट? सो व्हेन डेल्टा एक्स बिकमिंग वेरी वेरी स्मॉल, देन लाइन जॉइनिंग ए बी, बी व्हेन बी अप्रोचिंग ए, राइट? सो देन द लाइन जॉइनिंग बिकम्स tangent at A. Okay, so line joining AB क्या हो रहा है? When B is approaching A, so line joining AB, line joining AB becomes what? Becomes tangent at A हो रहा है. So then इसको हम मैथमेटिक्स लैंग्वेज में हम क्या बोल रहे हैं? बोलो. So delta y by delta x under the condition डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 जो है ना, इसको ही हम dy बाई डी एक्स बोल रहे हैं. यही है स्लोप ऑफ टैंजेंट एट ए है. इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. तो जो ये भी है ना एवरेज चेंज दे रहा था, पहले डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स था. जब डेल्टा एक्स बहुत कम हो गया तो ये भी क्या हो गया? टैंजेंट एट ए हो गया. टैंजेंट का मतलब क्या है? किसी भी एक कर्व को, ओके, एक पॉइंट के पास जो लाइन टच करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टैंजेंट. आपको अच्छा से लैंग्वेज में समझ में आना है बोल तो मान लीजिए अभी बारिश चल रहा है ना, मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, आपका फ्रेंड साइकिल चला रहा है, पानी में से चला रहा है. तो अगर टायर को देखे तो टायर के पास जो पानी के जो बूंद है ना, किस डायरेक्शन में फ्लाई होते हैं वो लोग? सो किस डायरेक्शन में बोलते हो? उसको हम बोलते हैं टैंजेंशियल डायरेक्शन में, ऐसा. ओके, सो मान लीजिए समटाइम्स जब हमें नाइफ को शार्प करना है तो हम ग्राइंडिंग व्हील के अगेंस्ट प्रेस करते हैं ना, तो जो स्पार्क्स लगते हैं ना, वो स्पार्क्स जिस डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं टैंजेंट डायरेक्शन, है ना. सो और आप दीपावली के वक्त जो भोई चक्कर लगाते हैं ना, इजंट इट? व्हेन यू लेट दैट पर्टिकुलर भू चक्कर, व्हाट हैपेंस? सो इट रोटेट्स, नो? इन द जस्ट सी द स्पार्क्स हाउ दे मूव. द स्पार्क्स मूव इन tangential direction. So the line which touches the curve at only one point, that we call it as what? Tangent बोलते हैं. So here the line joining AB, okay, its slope or large interval gives average change, or small interval delta x tending to 0 instantaneous change. Okay, उसको हम बोलते हैं dy by dx. वही क्या हो रहा है? That becoming slope of line joining AB बोल रहे हैं. तो now so slope of line joining AB is what here? dy by dx, which is slope of tangent. Slope of what? Slope of tangent at point A, right? So here now slope you are saying, no? Slope simply defined like this in physics.
any line segment is there, for example, okay, it is making some angle theta with the horizontal, so its tan function in anti-clockwise direction, the tangent of angle, tan function का जो angle है ना, tangent of angle made by any line segment with x-axis or horizontal in anti-clockwise direction, इसको हम बोलते हैं slope. Okay, so now simple example, try to understand like this. You are walking on a ground like this, slowly surface is rising here like this. Okay, so when you are going, so over a surface it's rising, right? So how much it is raised, delta y, how much for you have gone along x direction. See, when you are walking, you are moving, right? So in x direction, how much you have gone, then how much you raised in y direction. So this delta y, this delta x, so this rise along y axis by run along x-axis. So in local lame language, we call this as slope, and this itself nothing but from geometry or your triangle, tan theta is opposite side by adjacent side. So how much rise when you go for along x? For change in value of x, how much change in value of y? The delta y by delta x is called slope. In mathematics language we call, so y difference in coordinates in y divided by difference in coordinates of x. This is called slope. Now, so as we are talking, m is equal to tan theta is equal to slope, right? If theta is less than 90, acute angle, for all values tan theta is positive, so we call slope positive. And if theta is equal to 90 degree, students, theta 90 degree, हम बोलेंगे slope em is equal to tan 90. You know tan 90 sin 90 by cos 90, 1 by 0, it's not defined, or infinity. So if theta is more than 90, so theta more than 90 means it becomes negative. Why? Tan 90 plus 30 मान लो 120. कौन सा quadrant? Second quadrant, isn't it? So if I take tan 120, students, this is tan of 90 plus 30. आप मैथ्स में पढ़े होंगे ना, all silver teacups, है ना? So tan of 90 plus 30 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेकेंड फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, tan फंक्शन नेगेटिव होता है माइनस, एंड ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 फंक्शन चेंज होगा, दैट इज इक्वल टू cot 30. सो यहाँ cot 30 के वाले जो भी है आप लिख लो, ठीक है, cos 30 बाई sin 30, सो √3 आ जाएगा, है ना. सो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जब भी स्लोप एंगल मोर देन 90 होता है तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है नेगेटिव. अगर एक्यूट एंगल रहा तो स्लोप पॉजिटिव, 90 रहा तो इन्फानाइट, ओके, मोर देन 90 रहा तो नेगेटिव स्लोप बोलते हैं. सो स्लोप नथिंग बट वेरिएशन इन वाई, जितनी जनरल क्वांटिटी वाई एक्स जो भी लो आप, वाई के ऊपर वाई के प्लस में कुछ भी लो, एक्स के प्लस में कुछ भी लो. मान लीजिए हम फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, सो डिस्प्लेसमेंट कैसा चेंज हो रहा है टाइम के साथ. मान लीजिए आप वेलोसिटी ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, टाइम के साथ वेलोसिटी कैसा चेंज हो रहा है, वेरिएशन वैल्यू ऑफ चेंज इन वाई मीन्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ऐसा हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक है. सो दैट पर्टिकुलर वेरिएशन, हाउ व्हाट इट द वेरिएशन मे बी, सो हाउ इट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, हाउ द विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हाउ द वैल्यू ऑफ वाई चेंजिंग, ये जो वेरिएशन स्टडी है ना, इसको हम बोलते हैं स्लोप. एंड दिस मेथड ऑफ स्टडिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. बस इतना काफ़ी है हमें फिजिक्स में इसको समझने के लिए, ठीक है. अब हम फार्मूलाज देखेंगे, एक एक कुछ फार्मूलाज याद रखो रिमेनिंग, ओके. आप डिटेल में आप मैथमेटिक्स में तो कैसे पढ़ने वाले हैं. तो हम ऑलरेडी एक फार्मूला डिराइव किए थे, याद है आपको. सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बोल के कितना आया था वो, 2x. ऐसा ही हम एक्स को भी डिराइव कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को हम बोलते हैं 1, ठीक है. सो जनरल फार्मूला याद रखिए. सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, what do you call it as, n into x power n minus 1. Put n different values will get. Now similarly some functions you remember बेटा, like d by dx of sin x हम बोलेंगे cos x, ठीक है. एंड हम बोलेंगे समरी ऑफ फार्मूला कर रहा हूँ मैं अभी, d by dx of cos x हम बोलेंगे minus sin x, ठीक है. Just remember this formula all of you, and pause and you can remember the formulas, you can take notes also. d by dx of tan x हम बोलेंगे इसको secant square x, ओके. सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स हम बोलेंगे इसको माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ओके. सो डी बाई डी एक्स ऑफ मान लीजिए सीकेंट एक्स हम बोलेंगे सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स. हम बोलेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, वी कॉल इट एज
minus cosecant x into cot x. Okay, that is some trigonometric function, algebraic function, okay, some exponential, some logarithmic function, okay, like d by dx of exponential function e power x बोलेंगे. नेक्स्ट मान लीजिए d बाई डी एक्स ऑफ सम a पावर x, इसको हम बोलेंगे a पावर x इंटू लागे. डरो मत, ये सारे फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, खाली काफ़ी है हमारे लिए डिस्प्ले काइनेमेटिक्स में ये फार्मूला. बाद में फ्यूचर में आएंगे जब देखेंगे, ठीक है. सुनाओ e पावर x इंटू लागे बोलेंगे. सो कुछ फार्मूला ऐसे मान लीजिए दो फंक्शंस है, ओके, ये इन द फॉर्म ऑफ u एंड v बोलेंगे, एंड दिस u एंड v आर दे आर फंक्शन इन x. सेपरेटली डिफरेंशिएट करके ऐड करो, लाइक डी यू बाई डी एक्स बोलेंगे, इसको डी वी बाई डी एक्स बोलेंगे. ये हो गया सम फॉर्म में. मान लीजिए हम डी बाई डी एक्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है, तो दोनों को प्रोडक्ट में है ना, तो क्या करना है, साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हैं, इसलिए फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रख के सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, देन कीप सेकंड फंक्शन कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन. Okay, so like this. And one more form is there, so d by dx of denominator form, okay, u by v form. क्या करो फर्स्ट, सो डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर. ऐसे याद करो. न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर रहा तो क्या करना है, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर divided by denominator square. So like this, just remember the here few formulas. Okay, so now after that we'll do some functions differentiation, then we go for physics applications. Now we'll first talk about physics application, then we go for some practice. Okay, now you see, now in physics applications, as I said, displacement varying as a function of time मानेंगे. Okay, तो हम बोलते हैं rate of change of displacement, this is called average change. This is called average velocity. If I want instantaneous, means very very small interval of time, small displacement ds, small time dt, this is called ds by dt. This we call as instantaneous velocity. ठीक है, मान लीजिए velocity is a function of time. So velocity टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो मुझे टोटल चेंज इन वेलोसिटी टोटल टाइम, इसको बोलते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन. अगर ये बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा वी बाई डेल्टा टू को हम बोले इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज. ऑफकोर्स वेक्टर क्वांटिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं, वेलोसिटी भी रख सकते हैं आप, ओके, वेक्टर फॉर्म. सो इसको हम बोलेंगे इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है. एंड वन मोर फार्मूला वी यूज बेटा हियर, चेन रूल. ओके, जस्ट कीप इन माइंड व्हाट इज चेन रूल, लिंक रूल. मैं सिंपल से बताता हूँ आपको, सुनिए. यहाँ देखो, वेलोसिटी जो है पोजीशन के ऊपर डिपेंड होता है ना, पोजीशन जो है टाइम के ऊपर डिपेंड होता है. वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट बेटा, पोजीशन, द रेट एट विच डिस्प्लेसमेंट चेंजेस, एंड x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इजंट इट. सो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ पोजीशन चेंज होता जा रहा है. अगर मुझे चेंज इन v विथ रिस्पेक्ट टाइम चाहिए, इसका मतलब मुझे डी वी बाई डी टी चाहिए. क्या हो रहा है, v x के ऊपर डिपेंड हो रहा है, x किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, t के ऊपर डिपेंड हो रहा है. तो आप क्या करो, v को x के अनुसार डिफरेंशिएट करो, इसका मतलब डी वी बाई डी एक्स, एंड x t के साथ चेंज हो रहा है, तो इसको क्या लिखना है, डी एक्स बाई डी टी. सो v इज ए फंक्शन ऑफ x, x is function of t. If you want to find v as a function of time, first differentiate v with respect to x, dv by dx, then x with respect to time, dx by dt. एक बार पास करके पुनः सुनना है. तो v function of x, dv by dx, x function of time, dx by dt. इसे बोलते हैं हम चेन रूल बेटा. ओके, सो वी कैन ऑल्सो कॉल दिस फार्मूला एक्सेलरेशन एज ए dx by dt को हम v बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड dv by dx. Okay, so like this, these three formulas we'll be using in physics, just keep in mind. So ds by dt को हम v बोलते हैं, dv by dt को हम a बोलते हैं, एंड a को हर एक फार्मूला चेन रूल के फॉर्म में a इज इक्वल टू v dv by dx बोलते हैं. ये याद रखना है हम, ठीक है. सो नाउ हम अभी कुछ फिजिक्स के एप्लीकेशंस लेंगे, उसके पहले चेन रूल में हर एक प्रॉब्लम समझाता हूँ, सुनिए. मान लीजिए एग्जाम्पल, सो d by dx ऑफ, ओके, सम एक्स स्क्वायर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
तो यहाँ क्या करेंगे हम, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, एक्स का फार्मूला क्या है 2x, लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर है ना फंक्शन ऑफ एक्स में है ये, तो हम इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एक्स को हम जनरल फार्मूला नहीं लिखते, इसको डी बाई डी एक्स 1 इसलिए नॉर्मल फार्मूला 2x लिखते हैं, लेकिन इसको भी लिखना है। ठीक है, मान लीजिए आपको कहाँ समझ में आएगा बोल तो ऐसा मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ, हाँ ए लेंगे, साइन ऑफ सम ए एक्स प्लस बी मानेंगे। अभी हम फार्मूला देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स फार्मूला क्या है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स फार्मूला क्या है, कॉस एक्स, है ना। सो अभी देखो यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होता है, दिस विल बिकम हाउ मच रे, cos ऑफ ए एक्स प्लस बी, बट दिस आर्गुमेंट आर एंगल इज फंक्शन ऑफ एक्स, सो उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको ही बोलते हैं हम चेन रूल। ठीक है, तो व्हाट हैपन नाउ इट बिकम्स, मेक ए हैबिट, जस्ट प्रैक्टिस विल गेट इट, cos एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, ए कॉन्स्टेंट है, ए इंटू 1, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्यों, वो चेंज नहीं होता है भाई, कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है, चेंज कितना है 0, इसलिए डिफरेंशिएशन 0। तो ये हो गया ये cos ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, सो लाइक दैट सम फंक्शन यू कैन टेक, लाइक y इज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको y डैश बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन, और dy बाई डी एक्स बोलते हैं। तो क्या होगा बोला अभी, ये होगा 2x, क्यों, और स्टेप बाय स्टेप लिखो, फर्स्ट टाइम है ना, तो सुनो, तो इसको क्या लिखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बोलते हैं, है ना। सो यू कैन मेक इट नाउ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0, सो व्हाट यू गेट बेटा 2x प्लस 2। इफ यू वांट टू अगेन डिफरेंशिएट, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ, हम क्या बोलेंगे इसको, डी वाई बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। और ज्योमेट्रिकल बोलना है तो ये तो स्लोप है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप कैसा चेंज हो रहा है वाई एक्स ग्राफ का, सो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, दैट इज कॉल्ड सेकंड डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं इसको। सो डी बाई डी एक्स ऑफ किसको कर रहे हैं, और 2x प्लस 2 को, ये 2x प्लस 2 क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, तो क्या होगा 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, कॉन्स्टेंट 0 होगा, ये हो गया 2। So this we call double differentiation. Okay, so d square y by dx square. Now, so some more trigonometric functions you practice, then we go for physics applications. Okay, now like for example y is there, what you can call some e power ax plus b है ना। सो मैं चेन रूल डायरेक्ट यूज़ करता हूँ, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लो आप यहाँ, इसको ऐसा मान लो ax प्लस b को कुछ u मानो, है ना। सो जब क्या हो जाता है, y becomes now e power u, वेयर u how much बेटा, u इज ax प्लस b। अभी देखो यहाँ चेन रूल, y फंक्शन ऑफ u है, u फंक्शन ऑफ x है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx करना है। तो क्या बोला मैंने, y u फंक्शन ऑफ u है, इसलिए फर्स्ट क्या करो dy बाई du, देन u फंक्शन ऑफ x है ना, इसको क्या लिखना है du बाई dx। ओके, समझ में आया था, और एक बार रिकैप करके सुनो। तो y फंक्शन ऑफ u, सो dy बाई du, u फंक्शन ऑफ x du बाई dx। नाउ dy, y यानी e पावर, हाँ d बाई डी यू ना, हाँ y इज e पावर u इंटू, सो d बाई डी एक्स ऑफ u यानी ए एक्स प्लस बी। सो हम क्या लिखेंगे इसको अभी, d बाई डी ऑफ e पावर u, e पावर u फार्मूला, e पावर x का e पावर x होता है, हाँ यहाँ देखो d बाई डी एक्स ऑफ a इज कॉन्स्टेंट है, d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, कॉन्स्टेंट 0 है। तो अभी e पावर u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ u का वैल्यू कितना लिए हम ए एक्स प्लस बी, सो e पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ए, कैसा याद रखना है इसको, सो डी बाई डी एक्स ऑफ, हाँ e पावर ए एक्स प्लस बी, से मान लो इसको पूरा को एक कैपिटल एक्स मानो यार, e पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पावर एक्स ही होता है ना, e पावर एक्स ही होता है, लेकिन ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसको भी डिफरेंशिएट करना है। सो चेन रूल तो वही है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इज ए, जस्ट सिंपली राइट द कोएफिशिएंट ऑफ ए हियर इन मल्टीपल, दैट्स इट। ओके, या एग्जाम्पल ये हो गया। नेक्स्ट मान लो y इज इक्वल टू, अभी मुझे ये बोलो सेम फॉर्म में बोलो, e पावर साइन एक्स है, तो क्या होना चाहिए y डैश आर डी वाई बाई डी एक्स, हाँ e पावर x का e पावर x ही, दैट इज e पावर साइन एक्स इंटू, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, बस हो गया। ठीक है, सो ऐसा हम प्रॉब्लम्स करेंगे। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है y इज इक्वल सम रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, डिफ्रेंशिएट करो बोलता है, फाइंड आर एवैल्यूट y डैश बोलता है।
तो क्या करना है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, एक्स पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको. सो प्लस फंक्शन है ना डी, इसको इधर साइड यू आर डूइंग नो, सो सेपरेटली यू डू एंड ऐड. सो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को ऊपर लेके जाओ, न्यूमरेटर में क्या होगा ये -1/2. सो एक्स पावर एन का फॉर्मूला में दिया था आपको, याद है. सो क्या है बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, एन इंटू एक्स पावर एन -1. सब्स्टिट्यूट हियर 1/2 एक्स पावर 1/2 -1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगेन 1. लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन लिख रहा हूँ. नेक्स्ट एन इंटू 1/2 मतलब -1/2 एक्स पावर n -1 1/2 -1. तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स पावर 1/2 -1 इज -1/2 राइट. सो एक्स पावर 1/2 एक्स पावर -1/2, ये माइनस है यहाँ, -1/2 एक्स पावर -3/2. सो यू कैन ऑल्सो राइट 1/2 रूट एक्स, यू कैन ब्रिंग इन डिनोमिनेटर. सो ये हो जाएगा -1/2 इंटू एक्स पावर 3/2. ओके, यू कैन स्टॉप हियर और फर्दर सिंप्लीफाई एज यू विश. ये होगा फर्स्ट डेरिवेटिव. ठीक है या. सो और कुछ प्रोडक्ट फॉर्म के देखेंगे अभी हम. मान लीजिए इफ़ यू आस्क यू टू फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू log एक्स, तो ये फंक्शन होगा यू वी के फॉर्म में है, ये यू है ये वी है. सो फार्मूला क्या है, यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स. yes or no? So now u means x into d by dx of, you can write one step, no issue, log x plus v means log x into d by dx of u means here x into log x differentiation is 1 by x plus log x into d by dx of x is 1. So you can write down this as simply log x plus 1. ये हो गया first derivative. Which formula I applied here? UV formula, right? So now, so next we talk about students, if y is equal like some x square by, okay, 2x plus 3. So which is form this is? This is what form? U by v form. कैसा लिखेंगे इसको बोलो. So formula क्या है बोलो, y dash is denominator, गुर्तुंदा, remember, denominator into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator divided by denominator square, है ना. अभी देखो, so denominator is 2x plus 3 into differentiation of numerator is 2x minus u is x square. You can pause and you can do, no issue. Okay, d by dx of v का क्या होता है 2x plus 3 ना, so 2 into 1 constant का 0 हो जाएगा, divided by v square यानी 2x plus 3 whole square. ठीक है. So this becomes now 4x square plus 6x minus 2x square divided by 2x plus 3 whole square. So you can write down 2x square plus 6x divided by 2x plus 3 whole square. Further you can simplify, or if you take 2x common here, x plus 3 divided by 2x plus 3 whole square, or you can stop there only, no issue. So like this uv formula, f of x plus g of x, u by v form, remember those formula and differentiate it. Okay, so now 1-2 numericals will take based on physics applications. भाई हमारा physics तो main है ना. तो मान लीजिए, so displacement of a particle is a function of time changing like this, t square plus 3t minus 8. You find velocity पूछेगा हमें, और velocity any time t instantaneous velocity पूछेगा. So what you have to do now? Come on, tell me. So what is velocity? Rate of change of position or displacement. Okay. Here at t is equal 0, particle. Okay, if it say x, this is x. If you say position, t is equal to x का position क्या होगा? -8 meters. Negative of x axis शुरू हो रहा है ना? As time passes, it is moving ahead मान लेंगे. ds by dt. So d by dt of position. So t square plus 3t minus 8. So d by dt of t square is 2t, x square is 2x, so 3 constant, d by dt of x is 1, so d by dt of t is 1, d by dt of constant is 0, so 2t plus 3 आ गया. So velocity of particle is a function of time आ गया. Now, so if we want velocity at t is equal to 2 seconds, substitute here, 2 into 2 plus 3, how much बेटा? 7 meter per second.
है ना। तो ऐसा हम अगर पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रहा तो वेलोसिटी मान लो, सो वे डिफरेंशिएट करेंगे. नाउ इफ यू डू फर्दर डिफरेंशिएशन, सो दैट इज डी बाई डी टी इफ यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. सो इसको हम क्या बोलते हैं, डी बाई डी को एक्सेलरेशन. सो डी बाई डी टी ऑफ हाउ मच विल गेट, सो 2t plus 3. So now 2 is constant, d by dt of t is 1, constant is 0. So this becomes what, 2 meter per second square. Alright, it is coming uniform acceleration. When uniform acceleration, so acceleration is constant. Already we have seen kinematics. We can use equations of motion. You find velocity at the end of 2 seconds. What is the formula? U plus at. U is at t is equal 0 velocity. At t is equal 0 velocity, how much right here? That is 3 meter per second. So you can substitute here now. This is 3 plus this is 2 into time how much? That is 2. This is 7 meter per second. Same answer hai ki nahi? So like this, by if acceleration constant, you can use equations of motion. If not constant, you have to go method of differentiation and integration. Okay. So like this we have applications. Okay. Yeah. If you want to do one more question. Yeah. So for example, anyway you can take, so displacement of a particle changing as a function of time as some t square minus 2t plus 3. He may say find the time after which velocity becomes 0. मान लो कितने समय के बाद इसका velocity 0 हो रहा है, इसका मतलब वो रेस्ट में आ रहा है. तो फाइंड आउट करो वेलोसिटी को क्या करना है, dx by dt है ना. सो d by dt of t square is 2t minus 2 into 1 plus 0. कितना हो गया, 2t minus 2 वेलोसिटी हो गया. सो कितने समय के बाद वेलोसिटी 0 हो रहा है, इसको 0 करो. yes, we're getting 2t is equal to 2. तो क्या होगा बेटा, t is equal to 1 second. सो 1 second के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो रहा है. सब्स्टिट्यूट करके देखो वहाँ, 2 into 1 minus 2 0. सही बात है ना. सो मान लीजिए व्हाट इज द एक्सेलरेशन, यहाँ भी एक्सेलरेशन निकालेंगे हम फॉर टाइम बीइंग प्रैक्टिस के लिए. तो डी बाई डी टी ऑफ 2t minus 2 ना. सो डी बाई डी टी ऑफ 2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ t इज 1 minus 0. यहाँ भी एक्सेलरेशन लकीली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आ गया. ऐसा हम, so position as a function of time, we can differentiate it, we'll get velocity. Velocity function of time, differentiated acceleration. Okay, so one more video I will make with only questions of physics. Okay, yeah, so let us keep in a short brief manner. So differentiation क्या होता है, variation value of one quantity with respect to the other is called what? So average change delta y by delta x, instantaneous change dy by dx is geometrical meaning, and the formulae and all just I tried to explain, so very short and sweet manner. If you like, so please forward to all and your friends, and please like and share and comment and subscribe my channel. Okay, so thank you all the best. Next video I will make maxima minima, and I will take few more numericals on kinematics. Okay, and then we go for integration. Yeah, thank you all, have a good day.